Hi everybody, welcome to my YouTube channel. And आज मैं बात करूँगी that why is it so important that you should be having a podcast of your own. जब मैंने अपनी podcasting journey start करी थी, it's been 1 year ago. I just started it as a hobby, but I realized that it makes you so confident because जब आप podcast बना रहे होते हो, you're actually sharing your opinion with the world out there, and you don't even have to come in front of the camera. You can just record it on your phone and share it out with the world what you have it inside you. So if you're a college student and if you're a student who's just figuring out life, it is so important that you start a podcast. In the long run, it will also help you to build your brand. So in this video, I'm going to tell you crisp ways, easy ways to start your podcast. Before actually starting your podcast, there are certain things which you should keep in your mind. And the first and the foremost thing is know your why. A lot of time we start things and हम उसे पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है यार छोड़ हम सो टायर्ड या हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं. बट जिंदगी में अगर आपका वाई क्लियर है ना कि आपको क्यों करनी है वो चीज, आपकी पॉडकास्टिंग जर्नी में आपको उसे कंटिन्यू करना, पॉडकास्ट बनाना कंटिन्यू करना इजी हो जाएगा. सो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा वाई था कि आई एम डूइंग इट फॉर फन. बट जैसे जैसे मैंने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा वाई भी चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम पीपल टेलिंग मी कि मेघा मेरे को आपके पॉडकास्ट से बहुत बेनिफिट हो रहा है, या फिर मेघा मैंने कोविड में आपका पॉडकास्ट सुना एंड आई फील सो पॉजिटिव अबाउट इट. एंड ऐसे मैसेजेस ने मुझे मोटिवेट करा कि मैं अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी को कंटिन्यू करूँ. सो वेर एवर यू आर राइट नाउ, इन विच एवर स्टेट, your voice matters, so pick up that phone and start your podcast because you never know आपके पास कौन सी नॉलेज है, कौन सी स्किल है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. एंड देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो उससे बेनिफिट ले सकते हैं. आई रिमेंबर मेरी वर्कशॉप्स में मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कौन सुनेगा, मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं तो सिर्फ एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, और मैं तो सिर्फ एक जॉब में वर्क कर रहा हूँ, और आई एम जस्ट अ मदर. But let me tell you, there are your listeners, there are listeners waiting to listen to you, there are people who are waiting to listen to the skill that you have in you, whether it's about trading, whether it's about love, whether it's about any skill that you have that you can share it with the world. So here are easy ways to start a podcast. And I so wish जब मैंने अपनी podcasting journey start करी मेरे पास कोई mentor होता जो मुझे guide करता. But I'm here for you. First thing is जब भी आप अपना podcast start कर रहे हो, you should be aware about the name of the podcast. Name should be crisp and clear, and try to include the words related to your podcast niche. For example, if my podcast is related to motivation or related to sports, I'll try to add that word in the podcast name. For example, if my podcast is related to health, I'll try to make a podcast name related to something like health in 30 seconds or health key takeaways, something like that, ताकि लोग इजिली रिलेट कर पाए कि आपका पॉडकास्ट किस चीज़ पे है. डिसाइड द टॉपिक फॉर योर पॉडकास्ट कि आप किस टॉपिक में बहुत देर तक बात कर सकते हो, या किस टॉपिक पे आपको नॉलेज है, और चूज अ टॉपिक जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो एंड यू वोंट गेट बोर्ड. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर एक ज़ील होए कि आप उस टॉपिक के बारे में लर्न करना चाहते हो, या एक्सपर्ट्स को ला सकते हो अपने पॉडकास्ट में ताकि आप लर्न कर सको और आपकी ऑडियंस बेनिफिट कर सके. वंस यू आर क्लियर अबाउट कि आपके पॉडकास्ट का नेम क्या होना चाहिए, आपके पॉडकास्ट का टॉपिक क्या होना चाहिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट को होस्ट कर सको. आई जनरली प्रेफर अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज हबहॉपर. इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्रीली साइन अप कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट एन अकाउंट. यू जस्ट हैव टू ऐड योर गूगल अकाउंट डिटेल्स एंड आप लॉग इन करके अपना अकाउंट बना सकते हो. बेस्ट पार्ट इज जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपने पॉडकास्ट को होस्ट करते हो, होस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली डिफरेंट पोर्टल्स पे आपके पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जस्ट लाइक ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो बट वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे रह रहा है, बट अगर आप हबहॉपर पे पोस्ट कर रहे हो, हबहॉपर ऑटोमेटिकली डिफरेंट पोर्टल पे उसे सर्कुलेट करेगा, लाइक स्पॉटिफाई पे, विंक पे, हंगामा पे. उससे आपका वर्क रिड्यूस हो जाएगा कि टू स्प्रेड इट टू अदर पीपल. इससे आप न्यूअर ऑडियंस को भी रीच आउट कर सकते हो. सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज देयर विल बी पीपल बियॉन्ड योर सर्कल लिसनिंग टू यू, and it will help you in the long run to build your brand too. So first is deciding the name for the podcast. Second is deciding the topic for your podcast. Third is actually signing up and deciding the hosting platform. Once you have decided the hosting platform, what are you waiting for? Start recording. Next step is start recording your podcast. जब भी हम record कर रहे होते हैं, there are few things that you can keep in your mind. It's a very crisp video. I can go on talking about recording, but I'll just share it with you in crisp कि आप अपने phone से recording start कर सकते हो. In your phone there are inbuilt recorders. If you're planning to buy a mic, you can always drop me a DM. I can recommend you mics as a beginner you can use to start your podcasting journey. Otherwise, phone is a good go-to thing when you're starting your podcast. You have to take your phone, but जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं आपको 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है. फर्स्ट इज इंट्रो.
then is the main body, and then is the third outro. In intro, you generally say something like you introduce yourself and your podcast. In the outro part, there is always a call to action कि लोग क्या करें after listening to your podcast. For example, in my intro, I say, hello everybody, welcome to my podcast, Self Love in 60 seconds. So you can have an intro for your podcast. Then in the outro, I say, if you like this podcast, do subscribe to my channel. In the outro, you can also recommend people to follow you on Instagram or reach out to you, or sometimes some people mention about the newsletters also, where people can sign up and receive more updates from them. So here are few things that you can mention when you're writing your script. Your intro, your body, and your outro are the three main things when you're writing a script for your podcast. Once you're done with the script, get set to recording and then upload your podcast. Before uploading your podcast, I would recommend you to at least make 3 episodes ताकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो टू अपलोड इट. सो जब आपने अपलोड कर दिया पॉडकास्ट को, एंड जस्ट डोंट सिट एंड विश कि ओ गॉड मेरे पॉडकास्ट को तो लोग सुनने लग जाएंगे. स्टार्ट शेयरिंग इट विद योर लव्ड वन, स्टार्ट शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, स्टार्ट आस्किंग देम कि उन्हें कैसा लग रहा है पॉडकास्ट. एंड इफ यू वांट टू मेक सम एडिटिंग इन योर पॉडकास्ट, यू कैन ऑलवेज रेफर टू सम फ्री एप्स लाइक Audacity is a free portal, GarageBand is a free portal, जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो अपने पॉडकास्ट को, इंट्रोज एंड आउट्रोज ऐड करने के लिए, म्यूजिक ऐड करने के लिए. आई विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट बिकॉज दैट्स लाइक a huge big video to make you understand how to use platforms like Audacity and GarageBand and so on and so forth. But to start with, just start raw. अगर एक दो मिस्टेक्स हो भी गई तो की फर्क पैंदा यार. You can always start. And the best part is, अगर आप मेरे पॉडकास्ट में जाके मेरा फर्स्ट एपिसोड देखोगे और अब का एपिसोड देखोगे, आई हैव ग्रोन इन माई जर्नी. मेरा फर्स्ट एपिसोड के पीछे तो लिटरली कबाड़ी वाले भैर की आवाज़ या बर्ड्स की चपिंग की आवाज़ थी. अब एपिसोड में इट हैज़ ग्रोन, इट्स क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव. सो यू कैन स्टार्ट रॉ, but eventually your journey will improve. So what are you waiting for? Start your podcast. If you have any other doubts, you can always reach out to me. And one more thing, you also have to make a cover art for your podcast, which is like a DP for your podcast. जैसे Instagram में हमारी DP होती है, Facebook में हमारी DP होती है, वैसे ही podcast की एक DP होती है. It's like a DP which represents you and your persona and the persona of your podcast. You can either have your picture on it or a picture related to your podcast. Always ensure that you're using a royalty-free image and आप कैसे cut copy paste नहीं कर रहे हो. अपने कवर आर्ट में इंश्योर करो कि आपके पॉडकास्ट का नेम या आपका नेम जरूर एडेड हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर पॉडकास्टिंग जर्नी एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं इन रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू. टेक केयर एंड हैप्पी पॉडकास्टिंग.